वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। ओके, सो हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। नाउ वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 2। ओके, सो चैप्टर 2 में फर्स्ट है यूनिट 1, दैट इज फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। ओके, सो हम फिस्कल फंक्शंस देखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल फंक्शंस, क्यों लाया गया। ओके, ये पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर होता है। ओके, सो लेट्स सी क्या है बेसिकली, इसमें क्या आप पढ़ेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी these three functions: allocation function, redistribution function, stabilization function. Okay, so it's a very simple chapter. Okay, so you don't have to worry much. Okay, बहुत easy chapter है. Okay, so the role of government in an economic system. Okay, एक इकोनॉमी अपने आप तो चलता है, लाइक डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड अपने आप चलता है। ओके, डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा जिनके कारण हमें प्राइस पता चलेगा एंड एवरीथिंग वर्क स्मूथली। ऐसा होता है इन रियल लाइफ? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, वी विल सी क्यों नहीं होता है। ओके, व्हाट फैक्टर्स आर देयर। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लाइक इफ द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ओके, बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स supply is very less. Okay, supply is very less and then it may have like demand बहुत ज़्यादा है, so it may create some depression or some inflation or some deflation in the economy. तब कौन आता है, तब कौन इकोनॉमी को बचाने आता है? सुपरमैन, स्पाइडरमैन? नो, इट्स द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट कुछ डिसीशंस लेते हैं जिनके कारण इकोनॉमी वापस स्टेबलाइज हो जाता है। ओके, सो हमें ये चैप्टर में देखना है। ओके, वी शैल फर्स्ट कंसिडर व्हाई एन इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इन प्लेस। The basic economic problem of scarcity arises from the fact that on account of qualitative as well as quantitative constraint, दो तरह के से scarcity आ सकता है। one is qualitative and the other is quantitative. Quantitative is like कोई measures कम हो गया, like GDP गिर गया या prices increase हो गया, these are like qualitative constraints. Quantitative constraint. Likewise there are qualitative constraint. Qualitative constraint means फ्यूल कम है इन द वर्ल्ड। ओके, फ्यूल कम है, ऑयल कम है, लाइकवाइज दैट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्स्टेंट विच इज एक्चुअल। ओके, द मॉडर्न सोसाइटी इन जनरल ऑफर्स थ्री ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू विच द डिसीजन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन में बी मेड, नेमली द मार्केट मतलब प्राइस, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, मार्केट बेसिकली मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट means a centralized system or regulative system. Okay, that is meant by government. Okay, so one is market, the second one is government, and then the last one is mixed system. And basically mixed system ही होता है where both capitalization and privatization both are there. Okay, so where both markets and governments simultaneously determine resource allocation. Okay, so that was it. Okay, एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ वो क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट्स। ओके, फ्री मार्केट्स मीन्स ओपन मार्केट विच इज डिमांड एंड सप्लाई एंड मिनिमल गवर्नमेंटल एक्टिविटी। वो कभी भी इनके सपोर्ट है कि बोलते कि मार्केट फ्री होना चाहिए हमेशा, मीन्स बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ही इकोनॉमी चलना चाहिए। बट he also says that minimal government activity तो होना चाहिए। Okay, however Smith saw an important resource allocation role for government when he underlined the role of government in national defense, maintenance of justice and the rule of law. So एडम स्मिथ बेसिकली उन्होंने देखा कि हाँ, गवर्नमेंट का रोल इधर ये सब सेक्टर में है, नेशनल डिफेंस, जस्टिस, लॉ में। ओके, एंड वॉट एवर विच आर बेनिफिशियल टू पब्लिक। ओके, विच आर बेनिफिशियल टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक वर्क्स। ओके, जो मार्केट अपने आप फेल हो जाता है। मार्केट कभी भी पब्लिक को देख के नहीं चलता। मार्केट इज एन इंडिविजुअल बेस्ड बायस। ओके, so that was it. Okay,
सो हमें पता है कि 1930s ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिनके कारण हमें पता चला कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली नहीं चल सकता, या ऑटोमेटिकली चल सकता है लेकिन बहुत अप्स हो जाता है, या कभी कभी बहुत डाउन, जैसे कि 1930s में हुआ ग्रेट डिप्रेशन। क्यों हुआ? सम वॉर के इफेक्ट की वजह से, सम दूसरा कोई कंट्री क्या वॉर के इफेक्ट की वजह से ग्रेट डिप्रेशन इधर इंडिया में हुआ। ओके, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो गया। सो तभी किनको आना पड़ा? इट्स द गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट हैज सम रोल्स इन द इकोनॉमी, दे हैव द मेजर रोल्स। ओके, सो रिचर्ड मुस्ग्रेव ने द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी बताया, दैट इज 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी। वन इज रिसोर्स एलोकेशन, सेकेंड इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सो रिसोर्स एलोकेशन, जो भी रिसोर्स है वो एफिशिएंटली हमें यूज़ करना होगा, दैट इज़ वन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिसोर्स मिला वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इट शुड बी फेयर और इट शुड बी इक्वल। ओके, इट शुड बी फेयर। ओके, एंड द लास्ट वन इज अ स्टेबलाइजेशन, एन इकोनॉमी शुड बी ऑलवेज स्टेबलाइज। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स होता है, बट इट डजेंट मीन कि हमेशा it should be a big cap. No, it should be a stabilized one. Okay, so we will be learning that 3. Okay, so first is allocation function. Okay, what is allocation function? Uh, Resource allocation refers to the way in which the available resources, जो भी resources है, or factors of production are allocated among the various uses to which they might be put. Okay, and it should be an optimal and efficient allocation. Okay, ये दो है important function किनका? allocation function का, कि जो भी resources है वो optimal and efficiently allocate किया जाना चाहिए। ओके, हर एक इंडिविजुअल को, ओके, या हर एक सोसाइटी में और हर एक मार्केट में। ओके, as we know, private sector resource allocation is characterized by market supply and demand. Private sectors क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज प्राइस। बेसिकली मार्केट सेक्टर कभी भी प्राइस को ही देखते हैं। ओके, सो दैट्स वाई उनका एलोकेशन दैट्स इट्स नॉट जस्टिफाई। ओके, दे जस्ट डू फॉर प्रॉफिट मोटिव। ओके, price mechanism as determined by the consumer sovereignty and producer profit motives. Okay, this state allocation, okay, this state allocation on other hand is accomplished through the revenue and expenditure activities of government budgeting. Okay, state allocation means it's government. Okay, in the real world resource allocation is both market determined and government determined. बेसिकली रियल वर्ल्ड में दोनों तरह के एलोकेशन होता है। बेसिकली इट्स अ मिक्सचर, दैट इज मार्केट बेस्ड, दैट इज प्राइस बेस्ड, एंड द अदर इज गवर्नमेंट बेस्ड। ओके, गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया जाए, तो दे माइट डिक्रीज द टैक्सेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, सो दे कैन डू एनीथिंग। ओके, so these are both market determined and government determined. Okay, a market economy is subject to serious malfunctioning. A market economy, just a market economy कभी भी a malfunction, it can create many malfunctioning in the society. Okay, so that will be a problem. Okay, that will be a problem for us. Okay, or for anyone. Okay, efficient allocation of available resources in an economy takes place only when free and competitive market structure exist. Okay, free and competitive market structure होना चाहिए। Okay, and economic agents, जो भी economic agents होगा, okay, make rational choices and decision. Rational choices and decision means they should have the proper knowledge. Okay, they should have the proper knowledge, जो in real market कभी नहीं होता। okay, so in real market कभी नहीं होगा। it's ये जो whatever they have given the signs like free and competitive market, it's a sign of a perfectly competitive market, it's a sign of perfect market. Okay, so such efficient allocation of resources is assumed to be taken place only in perfectly competitive markets. In reality markets are never perfectly competitive.
सो एफिशिएंट एलोकेशन बेसिकली नहीं होता इन रियल लाइफ, दे जस्ट वांटेड टू टेल दैट, ओके, इन समरी. सो बेसिकली क्यों नहीं होता इन रियल लाइफ, ओके लेट्स सी. इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली है तो दे विल गेट द पावर, दे विल चूज देयर ओन प्राइसेस, सो दैट्स वन. मार्केट टिपिकली फेल टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स. मार्केट अकेले में दे डोंट थिंक मच ऑफ collectively, they don't think much of society, they think about the profit. So markets typically fail to provide collective goods. Markets fail to provide the right quantity of merit goods. मेरिट गुड्स जो होगा वो उनका राइट क्वांटिटी कंप्लीट, या फिर दे में स्टॉक सम गुड्स, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ देम सेल्फ. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट. Common property resources are overused and exhausted in individual pursuit of self-interest. Like if a person has some car, okay, car है या they have some vehicle, even though they have some vehicle, they will use the benefits of governments, okay, just for their self-interest, okay, just for the self-interest. Some finance scheme, they will use such schemes, okay, just for their self-interest, even if they don't require, like rich people do much, okay. देन एक्सटर्नैलिटीज़. एक्सटर्नैलिटीज़ जो हम रोक नहीं सकते उनके वजह से भी होता है. फैक्टर इमोबिलिटी. फैक्टर को एक जगह से दूसरा जगह तक नहीं जाने के कारण भी हो सकता है. और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द मेजर inequalities in the distribution of income and wealth. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बराबर नहीं होता, इनके कारण भी होता है, ओके. अकॉर्डिंग टू मुस्ग्रेव, द स्टेट मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट. द स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द नीड्स एंड concerns of the citizens are fulfilled. Need क्या है, okay, need basically it's like home, food, okay, home and food and cloth, okay, no, basically needs अभी ज़्यादा हो गया, like कम्युनिकेशन, કનેક્શન. સો हमें રોડ છે, રાસ્તા છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, ये सब एक इंडिविजुअल और अ सिटीजन they can't fulfill by themselves, okay. they want one institution, one big institution जो उनका सुने and they will provide them. that institution is government, okay. So either the state is the only, okay, government is the only instrument by which the needs and concerns of the citizens are fulfilled. आप जाके प्राइवेट सेक्टर को बोलोगे कि प्लीज़ प्लीज़ एक रोड बनाना, नो, दे विल नॉट मेक फॉर यू, दे आर जस्ट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज एंड बिजनेसेस, ओके. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट is necessary in an economy, okay. So there has to be a role of government in an economy because of that, okay. Public finance is connected with economic mechanism that should ideally lead to the effective and optimal allocation of limited resources, okay. जो भी resources है, of course every resources are limited in nature, okay. So जो भी limited resources, they should be effective and should be optimally allocated to everyone, okay. In the absence of appropriate government intervention, market failures may occur. गवर्नमेंट के इंटरवीन नहीं करने के कारण मार्केट फेलियर्स हो सकता है. एंड द रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी मिस एलोकेटेड with too much production of certain goods और too little production of certain other goods, okay. जिसके कारण एलोकेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता. जैसे कि कोई गुड्स को ज़्यादा नहीं बनाना था, वो ज़्यादा बन जाता है, एंड कोई गुड्स को ज़्यादा नहीं बनाना था, एंड और वाइस वर्सा likewise, okay. The government can provide us with goods and services that we cannot produce on our own or buy at a price from the market. Like example just I had given, it's a road or infrastructure or a defense mechanism or education जो हम खुद नहीं बाय कर सकते. दे कैन प्रोवाइड अस अ गवर्नमेंट, अ कलेक्टिव representative of people, okay. These interventions do not imply that markets are replaced by government action. इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट छोटा छोटा एक्शंस लेके, इसका ये मतलब नहीं कि कम्प्लीटली इट्स मार्केट गवर्नमेंट
ही चला रहा, it's not like that. Okay, so that was a variety of allocation instruments are available by which governments can influence resource allocation in the economy. Okay, a variety of allocation instruments are available जिनके कारण गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है रिसोर्स एलोकेशन में, जैसे कि डायरेक्टली प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक गुड्स, वो बोल सकते हैं गवर्नमेंट, दे कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड दे आर मेकिंग इट. ओके, दैट इज़ वन, डायरेक्टली मेकिंग एन इकोनॉमिक गुड. सेकेंड, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिस इंसेंटिव. लाइक गवर्नमेंट को मालूम है कि government can't do everything on their own. Okay, they can't do everything on their own, so they know that they require private sector. Okay, basically. So but they also want that private sectors जो government जो चाहते हैं, they make that goods only. Okay, so they may decrease the taxes of such goods. Okay, and they may increase of the goods which hurt or which is not beneficial to this society. In that way the government can influence the private sector, okay, to allocate the goods and services properly to the society. Okay, कॉम्पिटिशन्स पॉलिसीज ला सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ इंडिया है जो यूज़ करते हैं, ओके, इन इंडिया. एंड देन रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ में रेगुलेशन लाया जाता है गवर्नमेंट. ओके, कभी भी. ओके, लाइसेंसिंग कंट्रोल्स, मिनिमम वेजेस, ये सब उस रेगुलेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. ओके, let's go ahead. Social welfare. Okay, what is the most important thing a government does? Okay, it's a social welfare. Okay, social welfare is one of the primary and most commonly manifest reason for government intervention in the market. See, private sector कभी नहीं सोचता, okay, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट थिंक्स मच. ओके, क्यों? गवर्नमेंट, they also like they want votes, they want the tax amounts. Because of that they also do some welfare for the society. Okay, however it is also possible that instead of eliminating market distortions, sometimes government intervention may contribute to generate them. What does this statement says? अभी तक तो बोले कि कहीं पे भी मार्केट फेलियर हो जाता है, सो दैट टाइम गवर्नमेंट शुड come and intervene. Okay, intervene it and should make back it to normal. But here the statement is different. What it says, however it is also possible that instead of eliminating market distortion, जो भी market distortion हो रहा है उसको eliminate करने के बजाय और बावजूद और anything, sometimes government intervention may contribute to generate them. गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण मार्केट डिस्टोर्शन और भी हो सकता है. ओके, एंड इट हैपेंस. ओके, इट हैपेंस many times. Okay, because government are also not perfect. Okay, we will see that also. Okay, there is one point where they also say the government are not perfect. Okay, now the redistribution function. Okay, this is the second one. हमें allocate करना आ गया अभी. ओके, कहाँ कहाँ से allocate करना, कैसे allocate करना. नाउ इट्स ऑल अबाउट redistribution. जो जो allocate, जो resources मिला है उसको redistribute कैसे करना है. it should be always fair. Okay, so let's see. The distribution responsibility of the government arises from the fact that left to the market, the distribution of income and wealth among individuals in the society is likely to be skewed, and therefore the government has to intervene and ensure a more desirable and just distribution. What they say is कि इंडिविजुअल का इनकम या वेल्थ बहुत कम है, जो बहुत कम चांसेस है जो चेंज किया जा सकता है. ओके, बट एटलीस्ट इतना गवर्नमेंट को तो इंटरवेंशन करना चाहिए जिनके कारण अ मोर डिज़ायरेबल और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए. जस्ट मीन जस्टिफाइड. ओके, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए.
The distributive function of a budget is related to the basic question of for whom, किसके लिए should an economy produce goods and services, किसके लिए हम goods या ये goods या ये service क्यों और किसके लिए बना रहे हैं. ओके. जस्टिस नेमली इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्विटी और फेयरनेस होना चाहिए. ओके. हर एक रीडिस्ट्रीब्यूशन में. ओके. द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट व्हाट, क्या क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम to achieve what, equitable distribution of societal output among households. Second, advancing the well-being of those members of the society who suffer from deprivation, जो डिप्रीव्ड स्टेज में है, लाइक बैकवर्ड स्टेजेस, उनका वेलबींग के लिए. ओके. उनका वेलबींग का ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना. ओके. इक्वालिटी इन इनकम, दैट इज वन. providing security, okay, like job security or any other security in terms of fulfillment of basic needs for people who have hardships. Okay. Ensuring that everyone enjoys a minimal standard of living, at least everyone should have a minimum, okay, a minimal standard of living. For that, governments are doing so much, they are taking so much decision, they are changing policies, they are implementing, they are bringing up new schemes for that. Okay. A few examples of redistribution function, both examples है like progressive taxation, they increases the tax for the rich peoples, okay, to get back to the justifiable distribution state. Okay. बेनिफिट लो इनकम हाउस होल्ड, जिनको बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाते हैं गवर्नमेंट. एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, कोई कोई सेक्टर या कोई कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं जल्दी, तो उनके लिए एक रिजर्वेशन बनाया जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा तो उनके लिए बेनिफिट्स लाया जाता है. ओके. मॉनेटरी, कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हैं विथ मॉनेटरी एड्स एंड ऑल, लाइक टू फार्मर्स या टू टीचर्स और एनीवन. ओके. रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, रेगुलेशन लाते हैं कहीं पर भी, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज में. ओके. एंड सम स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स, ओके, और फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस. ओके. सो ये सब फंक्शंस था गवर्नमेंट का रीएलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस. ओके. देयर इज नेवरदलेस एन आर्ग्यूमेंट that in exercising the redistributive function there would be a conflict between efficiency and equity. Okay. So again a statement which is opposing the above things. Okay. इसका मतलब है कि like bringing special schemes या फिर रेगुलेशन लाने के कारण या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयड पीपल को बेनिफिट देने के कारण या फिर रिजर्वेशन देने, जॉब में रिजर्वेशन देने के कारण इक्विटी नहीं प्रोवाइड होता या फिर एफिशिएंसी भी नहीं प्रोवाइड होता. ओके. जो लेजी पीपल है दे विल गेट द जॉब वेरी इजीली if they have some reservation in that, and because of that जो जिनको सच में डिज़ायर, जो सच में केपेबल था, उनको नहीं मिलता. ओके. दैट इज़ वन थिंग रॉन्ग. ओके. now the last function, that is stabilization function. Okay. So rationale for this stabilization. Okay. Function of the government is derived from the Keynesian proposition that a market economy does not automatically generate full employment and price stability. कभी भी market ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लाता एंड प्राइस स्टेबल नहीं करवाता. मार्केट चेंजेस बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, and therefore the government should pursue deliberate stabilization policy. So इनके कारण गवर्नमेंट को कुछ इंटरवेंशन या कुछ पॉलिसीज, कुछ डिसीजन ऐसा लाना पड़ेगा जिनके कारण स्टेबलाइजेशन हो सके. ओके. in the absence of appropriate corrective intervention by the government, the instabilities, जो भी instabilities होता है जो गवर्नमेंट के बिना इंटरवीन करने या टाइमली इंटरवीन ना करने की वजह से होता है, that occur in the economy in the form of recession or inflation etc. may be prolonged for longer periods, causing
enormous hardships to people, especially the poorer section of the society. ओके, बेसिकली बता रहे हैं कि लाइक गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में इंटरवीन नहीं करेंगे, ओके, लाइक कुछ चीज़ों में डिले भी करेंगे कुछ पॉलिसीज या डिसीजन रिगार्डिंग, सो दैट टाइम सबसे ज़्यादा हार्डशिप्स किनको फेस करना पड़ेगा, दैट विल बी ऑफ कोर्स टू द पोरर सेक्शन, ओके। सो ये नहीं करने के कारण गवर्नमेंट शुड टेक टाइमली एक्शन और टाइमली इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, ओके। The stabilization function is one of the key function of fiscal policy and aims at eliminating macroeconomic fluctuations. हमें basically fluctuations निकालना है, that is basically stabilization function, okay. Macroeconomic fluctuation arising from the suboptimal allocation of resources, okay. Like the stabilization function is concerned with the performance of the aggregate economy in terms of labor, output, income, price, BOP, that is balance of international payments, and the rate. Okay, इन सब के कारण stabilization function effect और effect होता है. Okay, let's go ahead. Government's fiscal policy has two major components which are important in stabilizing the economy. So one is balance between what? Expenditure, okay, and the resources. It takes out through taxation. Balance कैसे लाएंगे? Taxation charges या borrowings के through, okay. Second one, a microeconomic effect generated by the specific policies it adopts, okay. So these are the two major effects. गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन में भी थ्रू कैसे कर सकते हैं वो लोग इंटरवेंशन? मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी. नाउ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? लेट्स सी. मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स थ्रू कंट्रोलिंग द साइज ऑफ मनी सप्लाई. बेसिकली मनी सप्लाई रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक कितना पैसा ज़्यादा प्रिंट करने का या पैसा को कम करने का थ्रू बॉन्ड्स, ओके, थ्रू इंक्रीजिंग द बॉन्ड रेट्स, ओके, और थ्रू द इंटरेस्ट रेट. So that is monetary policy. Second one is fiscal policy. What is fiscal policy? Fiscal policy for stabilization purposes attempts to direct the actions of individuals and organization by means of its expenditure and taxation decisions. Like government कोई चीज़ जिसको प्रमोट नहीं करना चाहता है तो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, ओके, सो दैट इट शुड गेट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट कम बिके इन दी, कम सेल हो जाए इन दी मार्केट, ओके. सो दैट इज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ओके. नाउ ड्यूरिंग रेसेशंस जनरली क्या करते हैं गवर्नमेंट्स क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू एंश्योर इनकम प्रोटेक्शन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर और कट्स डाउन टैक्सेस, ओके. ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन में क्या करते हैं? गवर्नमेंट कट्स डाउन इट्स एक्सपेंडिचर और रेसेस टैक्सेस, ओके. In other words, expansionary fiscal policy is adopted to alleviate recession and a contractionary fiscal policy is restored to for controlling high inflation. High inflation में contractionary fiscal policy यूज़ करते हैं and रिसेशन में एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली यूज़ करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ओके. डन द कंक्लूजन्स, ओके. क्या क्या पता चला इस चैप्टर के थ्रू, ओके. द नीड फॉर द रैशनल ऑफ गवर्नमेंट मतलब चाहिए हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए किसके लिए? सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करना है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस लाना है मार्केट में, ओके. In certain cases, the cost incurred by the government to deal with some market failure could be greater than the cost of the market failure itself. Basically बोलते हैं कि हर टाइम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अच्छा नहीं होता, ओके. बोलते हैं कि लेट्स मार्केट का फेलियर है, उनका कुछ कॉस्ट है, एग्जाम्पल इट्स X रुपीज़, ओके, और एग्जाम्पल वो मार्केट का फेलियर का कॉस्ट है ₹10, ओके.
लेकिन गवर्नमेंट इंटरव्यून करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दे हैव टू मेक समथिंग सम काइंड ऑफ सिस्टम, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कॉस्ट लग रहा है लाइक 100 रुपीज़. सो तभी इन दैट पॉइंट डस it makes sense for government to intervene in that situation? No, na. So there are some mistakes, okay. Moreover, this is the statement which I wanted to say, which I wanted to, you all to see. Moreover, just as individuals, governments too have only imperfect information and hence can commit mistakes, okay. It is also possible that individuals may use government as a mechanism for maximizing their self-interest. Moreover, government may not always be unbiased and benevolent. Means basically बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स ये या मैकेनिज्म है वो कभी कभी इंडिविजुअल्स उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एल्स अदरवाइज गवर्नमेंट अपना पावर अनबायसनेस लाने के लिए और अनफेयरनेस और अनजस्टनेस लाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इन द मार्केट, okay. So that was the chapter number 2 and unit number 1 basically. So we ended this unit, okay. So it was very simple chapter, very easy one, that was fiscal functions and overview, okay. We will study the unit 2 in the next lecture, okay. So thank you.